Good morning. Welcome to Business Morning. My name is Venkatraman. Today Indian markets will be closed. So in our Business Morning, we'll be going ahead with the economy today for next 1 hour. But before that, if we have a look at the market situation across the globe, indeed, there is volatility prevailing in the markets, especially there is a gloomy start for the corporate result season in the United States, impacting the markets across the world. Let's have a look at those updates as well to begin with US market updates. Well, US stocks closed sharply lower yesterday as investors hoping for signs of a rebound in corporate profits were greeted with a quarterly earnings miss from one company and a profit downgrade from another. In fact, investors began turning their focus once again to interest rates, pushing long-term yields higher. So those are the stats. Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq were all down by between 1.09 to 1.54%. Now let's have a look at the Asian market updates. And the impact of US markets is seen in Asian markets. The shares began the session on a 3-week close today after a gloomy start to Wall Street's corporate earnings season knocked United States stocks. Well, the dollar and treasury yields rose on growing expectations of US rate hike in December. SGX Nifty showing some sort of flat trends on a positive note, but the rest of all Asian markets have been showing negative trends. So, well, those are the updates about the global markets. But economy today, as I was mentioning, is a topic. Ajay is joining in Hindi and he'll be explaining you the topic. शुक्रिया वेंकट। इकॉनमी टुडे एक ऐसा शो जो आपके आर्थिक मोर्चे से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की एक छोटी सी कोशिश है। आज का मुद्दा है कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। केंद्र और राज्यों की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत बेहतर स्थान कैसे बना सकता है, साथ ही साथ कारोबार करने में सुधार होने से रोजगार कितने पैदा होंगे, देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस 1 घंटे के दौरान अगर आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, #economytoday का इस्तेमाल कीजिए, अपने सवाल हमें भेज दीजिए। और याद रखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार के माहौल को आसान बनाने से जुड़ा हुआ आपका सवाल होना चाहिए। अगर आप मेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं, economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए, ये हमारा जीमेल आईडी है। और आज इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, तो चलिए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं अजय सहाय जी, जो कि CEO और डायरेक्टर जनरल हैं FIO के। बहुत बहुत शुक्रिया सहाय साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ प्रोफेसर अभिजीत दास, जो कि IIFT के प्रोफेसर हैं और दुनिया भर के ट्रेड पर अपनी निगाह रखते हैं और देश में कैसे ट्रेड की संभावनाएं या फिर जो कारोबार का माहौल है उसको आसान बनाया जाए, आपसे हम कोशिश करेंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं आप #economytoday ट्वीट कीजिए या फिर economytoday.ddnews@gmail.com पर सवाल कीजिए। भारत को वैश्विक पटल पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर क्या कुछ किया गया है अभी तक, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या फिर जो वहाँ का ट्रेड है, इस बात पर निर्भर करता है कि कितना आसान है कारोबार करना। रोजगार के लिहाज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत को वैश्विक पटल पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए मेक इन इंडिया की भी शुरुआत की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या कुछ किया गया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर जोर देने के लिए मेक इन इंडिया का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से किया। मकसद साफ था, देश में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना, इस रास्ते को सुगम बनाना। सरकार का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देने पर भी है। इसके जरिए भारत को कारोबारी सुगमता में अगले 3 से 4 सालों में दुनिया के शीर्ष 30 देशों में स्थान दिलाने की कोशिश की जाएगी। सरकार और नीति आयोग इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर व्यापार करने को आसान बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। उद्योग लगाने के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। अब ये सेवाएं अब ई-बिज वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेंगी। आवेदन करने वाले फॉर्म का सरलीकरण किया गया है ताकि आवेदक को परेशानी न उठानी पड़े। लाइसेंस की वैधता को भी बढ़ाकर 2 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया है। अक्सर नया बिजनेस खोलने पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं,
इसीलिए DIPP ने ऐसे प्रश्नों की एक सूची भी तैयार की है। निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए इन्वेस्ट इंडिया के तहत निवेशक सुविधा केंद्र का गठन भी किया गया है। व्यापार खड़ा करने में दिक्कत ना हो, इसलिए अब नए बिजली कनेक्शन भी आसानी से मिल जाएंगे। रक्षा से लेकर फार्मा तक FDI नीति को सरल बना दिया गया है। सरकार के इन कदमों के कारण इनोवेशन के लिए माहौल बेहतर होना शुरू हुआ है। युवा नए कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मकसद है कि भारत कारोबार करने के लिहाज से बेहद सुगम और अत्यंत साधारण स्थान बने। कारोबारी सुगमता में भारत ने 12 पायदान की छलांग लगाई। बैंकरप्सी कानून और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल बनाए जाने से काफी मदद मिली है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत कारोबार सुगमता के लिहाज से 189 में 130वें स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विस्तार और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये कार्यक्रम इंटरैक्टिव है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें इंतजार है आपके ट्वीट्स और जीमेल का। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ भी समझना है या फिर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कर सकते हैं। साहिब साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के सबसे पहले तो आपका एक ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर आपके दिमाग में है उसको अपने लिहाज से हमें समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ सरकार ने किया है और क्या वाकई पिछले 2 साल की अगर बात करें तो कुछ सुधार हुआ है इसमें? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कोई एक अलग सेगमेंट नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी का पार्ट है जिसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। गवर्नमेंट का बेसिक एम क्या है कि एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके। और गवर्नमेंट बहुत कीन है कि हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम उसमें ऊपर आएँ। जैसे पहले आपने बताया कि हमारी रैंकिंग 130 है और जिसमें अगर आप देखिए 10 सेगमेंट जिसमें इंडिया की रैंकिंग होती है, पिछले जिस 2016 रिपोर्ट है 3 सेगमेंट में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, 5 सेगमेंट्स में हमारी रैंकिंग स्टेटस को रहा है, बट 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हमारी रैंकिंग लोअर हुई है। और वो सेगमेंट क्या है? वो एक सेगमेंट है गेटिंग क्रेडिट और दूसरा पेइंग टैक्सेस। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। गवर्नमेंट ने बहुत सी इनिशिएटिव लिए हैं और ये इनिशिएटिव किसी एक डिपार्टमेंट तक कन्फाइंड नहीं है, ये अक्रॉस डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे अभी आपने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बताया कि उन्होंने पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है और गवर्नमेंट ने एक तरह से पहल की हर जगह की प्रोसेस को इजी किया जाए, फॉर्म सिंप्लीफिकेशन किया जाए, सेल्फ सर्टिफिकेशन पे आप फोकस करिए, डिजिटलाइजेशन लाइए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज लाइए जिससे पूरा प्रोसेस सीमलेस हो सके। और जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर आप ट्रेड की बात कीजिए, बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक गो में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे, जो 10 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट्स के थे और एक्सपोर्ट के 7 डॉक्यूमेंट थे, उनको रिड्यूस करके 3 कर दिया है। 24/7 फैसिलिटी 17 एयरपोर्ट 19 सी पोर्ट पे स्टार्ट की है। कुछ जगह हमें अभी मालूम है कि वहाँ मैन पावर शॉर्टेज है तो वहाँ इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट आने वाले दिनों में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जहाँ तक ट्रेड को ईज करने की बात है, हमने देखा है कि कस्टम्स ने ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्कीम को फिर से रिलॉन्च किया है जिससे आपको ग्रीन चैनल फैसिलिटी ना अपने खाली कंट्री में मिलेगी, इंपोर्टिंग कंट्री में मिलेगी। बहुत से डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसके लिए उन्होंने कस्टम फैसिलिटेशन ट्रेड कमेटी बताई है। हम स्विफ्ट पोर्टल की ओर से जा रहे हैं जहाँ पे हमने 6 एजेंसीज को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया है। आने वाले टाइम में हम और एजेंसीज को इंटीग्रेट करेंगे। और ये सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, जैसे हमने शिपिंग में देखे उसमें बहुत से सुधार किए गए हैं। तो एक हम इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें बिजनेस करना ईजी हो जाए, क्योंकि अगर आप या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करे या फॉरेन इन्वेस्टर आए, दोनों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Right, so Professor Das, how are you looking at it? Because we have to accept that the country is going through an unprecedented period of economic liberation as well, and then India is opening up for its consumer base, vast consumer base for the other countries. As I was saying that many things have been done, but lot more things have to be done as well. We've brought in Companies Act, insolvency, everything, but the real challenge remains in the implementation part. How are you looking at that? Oh, let me mention a few facts right up front. The real importance of rankings like ease of doing business or logistics performance indicator or liner shipping connectivity index of UNCTAD, the real importance of these various indicators or indices is it tells us where we are compared to our competitors. We may be doing well, we may have made improvements, but are we regressing compared to others?
So that's the first important point to bear in mind. How do we fare vis-a-vis our competitors like, let's say, Indonesia, Malaysia, Turkey, Mexico, etc. And if we look at that perspective, then compared to some of the countries, we may have improved in some of the rankings, but lots needs to be done still. Let me give you a very simple example. Ajay mentioned the importance of attracting foreign investors. When will a foreign investor come in the country? When there is certainty of enforcing contracts. On that score, India ranks rather poor, 178. So that's one area where we really need to improve our rankings very significantly. Then let me give you another example where simple things like cost to export or time to export, we do not fare very favorably on those parameters. For example, in India, the time to export is close to 178 hours. I'm not even talking of Singapore, where the time to export is just 18 hours. If we look at a country like Malaysia, the time to export is 42 hours. Thailand, time to export is 64 hours. Even Vietnam, it fares much better. It's 147 hours. So it just shows the amount of catching up which we have to do. We've started well, no doubt, but the ground to be covered is very significant. Let me turn to the second parameter, cost to export. माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अगर रोक करके साहिब साहब से अगर हम एक वो रिएक्शन ले लें इस पे कि ऐसा क्यों है साहिब साहब की जो इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट करने में जो टाइम जाता है वो क्या हम सीरियस नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम लेते नहीं उतनी गंभीरता से जितना दूसरे देश ले रहे हैं हम कहाँ पिछड़ रहे हैं Yeah, I think one of the reason is that we have not gone for complete EDI connectivity amongst all the agencies who are involved in imports and exports. Achha. Secondly, I think we have not put focus on the logistics parts of that. But now the government is looking into that very carefully. They have already started a facility of direct port delivery where you can take the import consignment directly from the port. From the Federation side, we are also asking direct port entry. Why not the export goods directly move into that? Secondly, you have to look into some drawback on the part of the industry also. They are given a free period. They are availing the free period because they can retain the goods in the customs bonded warehouse or in the port area for a longer period. So government is also looking into reducing the period. Once that is done, I think it will also help in reducing the time taken. Government has also provided you the facility of duty different, where you can pay the duty little later because industry has to arrange money for payment of the duty. So once all these measures are implemented, to a large extent, they will be able to reduce the time lag into shipment for exports and imports. तो आप कह रहे हैं कि जो कंसेशंस दिए गए हैं शायद उसकी वजह से थोड़ा सा और सरकार ये भी कह रही है कि जो कंसेशंस उनको कम से कम किया जाएगा और इसीलिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात हो रही है प्रोफेसर जी तब आप दूसरे फैक्टर्स की बात कर रहे थे प्लीज़ उस पर जाएं उसके बाद मैं जो दूसरा फैक्टर जो मेरे जहन में था कॉस्ट टू एक्सपोर्ट जिसको आमतौर पर डॉलर्स पर कंटेनर के रूप में देखा जाता है यदि उसमें तुलना करें तब भारत में कॉस्ट टू एक्सपोर्ट है करीब $950 पर कंटेनर और यदि आप मलेशिया को देखिए $621 पर कंटेनर थाईलैंड और भी कम और भी सस्ता करीब $470 पर कंटेनर तो यह पुनः दर्शाता है कि हमें कितना और ग्राउंड कवर करना है इन सब मुद्दों पर और यह इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यदि हमारी रैंकिंग कम है लोअर मतलब हम बहुत सक्षम नहीं नज़र आ रहे हैं अभी सुधार हुआ है उसमें कोई शक नहीं है लेकिन बाकी देशों के तुलना में हम अभी भी थोड़े पीछे हैं तो इसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन किस में होता है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स गो अप जिसके वजह से जो एक्सपोर्ट की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो इरोड हो जाती है जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं इंपोर्टर के लिए उतने अट्रैक्टिव नहीं रह जाते हैं यदि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस तरीके से आगे बढ़ते रहें जो जिसकी अच्छी शुरुआत हुई है उससे हमारा कॉस्ट टू एक्सपोर्ट कम होगा
एक्सपोर्ट प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और जो अभी थोड़ा बहुत स्लगिशनेस आया है एक्सपोर्ट क्षेत्र में, हो सकता है उस स्लगिशनेस को हम लोग ओवरकम कर पाएं. Yeah, Professor, that's how are you looking at the other parameter? You're talking about the parameters. Resolving insolvency is another important parameter because that is influencing the World Bank rankings as well. And we are at 136th position overall. Now that we have a law, okay, but the point is the implementation itself is a challenge. We have a history of how laws have been enacted, but then implementation becomes a bigger challenge. It requires time, planning, building adequate state facility, state capacity. How are you looking at that? Oh, let me just say, Rome was not built in a day. So we will really have to see how this unfolds. But I am optimistic on that score, given the fact that there is a very concerted attempt by the government and a clear realization that we have to improve the ease of doing business in our country. I'm optimistic that the law will be implemented with full sincerity, and entering into a business as well as exiting out of business will become easier. That will certainly make life less difficult for entrepreneurs, particularly young new entrepreneurs. So it's a very good step, but we have to make sure, as you've said, that the implementation unfolds in a manner that helps everyone be fully in harmony with the basic objectives of the law. चलिए, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं. ट्वीट और जीमेल के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें इस कार्यक्रम में लिख सकते हैं. हमारा जो जीमेल आईडी है हमने आपको बता दिया, economytoday.ddnews@gmail.com. साथ ही साथ अगर आप हैशटैग economytoday का इस्तेमाल करते हुए कोई भी सवाल ट्वीट करते हैं तो सीधे हमारे पास आता है और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट आपके सवाल को लेने के लिए रेडी हैं. Well, in fact, it's the time for us to take a short commercial break. Don't go anywhere. Stay tuned. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Devin Choksi, member of PA since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूँ सूर्यदेव. एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा. अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो. मेरे ढलने से पहले का NAV. BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे. आज हम चर्चा कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की. सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है. ये देखते हैं हमारा पहला सवाल जीमेल के जरिए किसका है और वो क्या जानना चाहते हैं हमारे दोनों मेहमानों से. देखते हैं पहला सवाल. और जीमेल के जरिए ये सवाल हम तक पहुंचा है. जो FDI नॉर्म्स में रिलैक्स किया गया है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कहाँ तक मदद करेंगे. जय लक्ष्मी, आप में से कौन सवाल लेना चाहता है? प्रोफेसर आप लेंगे या साय साहब? जी. No, in fact, FDI is a very effective instrument not only for promoting export but also for creating employment in the country. Government has relaxed FDI across the sector. In fact, recently only much of the FDI inflow has taken place in the defense sector, and since in defense sector we have an offset clause where 30% of the total contract has to be procured from the Indian MSMEs, we expect around $7 to $8 billion which will be generated through that. But
when you are looking into the FDI, you have to have an enabling environment, and that's from that perspective, ease of doing business is very much relevant there. We have talked about the enforcing of the contract. We all know that the bankruptcy code has now been settled now, and we will see that there will be better regulation on the insolvency front. Earlier, it used to take 4.3 years to get the insolvency settled. Now, I think it will take much lower time. I think when I'm looking at all ease of doing business, we have to go for some massive radical reform. And one of the example which can be cited is of the UK. When the UK wanted to improve its ranking from 11 to a lower ranking, they have decided what is known as 1 in, 2 out. Any of the government department which wanted to introduce any regulation which entails a cost of $1 has to ensure that they do away with a regulation worth $2. And that has helped UK to move from 11th rank to 6th rank. And now they are working into 1 into 3. So I think that kind of system has to be introduced in Government of India also. So if any new measures have to be introduced which has a compliance cost, they have to at the same time get rid of the old regulation much more than what it was costed to the और industry. इसलिए जो पुराने कानून हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़े, प्रोफेसर साहब, एफडीआई और एम्प्लॉयमेंट में वाकई कोई कोरिलेशन है, और अभी तक जो हिस्ट्री क्या कहती है, और आगे जाते हुए अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अगर एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एफडीआई अट्रैक्ट करने से एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, लेकिन हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो या कुछ हमारे एफटीएज हों, उसमें उसके थ्रू हम लोगों ने अपने ऊपर कुछ डिसिप्लिन्स इम्पोज किए हैं. These disciplines are called restrictions on performance requirement. एक मैं उदाहरण दूं, आज से 20 साल 25 साल पहले यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता, तब सरकार यह ज़रूर उस पर कंडीशन लगा सकती थी कि आप लोकल सोर्सेज से ही लें अपने इनपुट्स. लेकिन अब के जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके तहत अब इस किस्म के परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हम लोग एनफोर्स नहीं कर सकते हैं. इसका नतीजा क्या होगा? जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है एफडीआई का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो अवश्य कम होगा. तो एक जो सेंट्रल लेसन हमें जहन में रखना चाहिए भविष्य के लिए, यदि हम चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो ये जो अभी भी जो पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है, इन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को हम लोग को रिटेन रखना चाहिए. हमारे ऊपर अवश्य दबाव होगा कि आप इन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को कर्टेल करें, कम करें थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. उन प्रेशर्स को हम लोग को रेजिस्ट करना होगा. यदि हम लोग वो रेजिस्ट कर पाएंगे, यदि ऐसा माहौल बना पाएंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तब मुझे कोई शक नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट अवश्य कर पाएंगे. और उसके लिए जो एफडीआई है उस पर रिटर्न जो है कम से कम उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि इंसेंटिव जो है वो लोगों को मिले. आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ इस प्रोग्राम में जानना चाहते हैं हमारे दर्शक इस वक्त ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर. ये भी जीमेल के जरिए सवाल आया. Well, the question is, does the government who is working for improvement of ease of doing business also include small and medium size? Sure. Ease of doing business actually is more relevant for small and medium enterprises, because the larger firms, they can absorb the costs which arise from various procedural hurdles or other infrastructural bottlenecks. It is really the small and medium enterprises which would really be able to benefit if ease of doing business is improved in the country. Let me just give you one very simple example. A small producer, he sources his inputs from different parts of the country. Given the inadequate infrastructure, given the poor road facilities, the time for his consignment to come into his factory is higher. He has to ensure better packaging so that the inputs do not get damaged. That further increases his cost.
So if some of these issues are addressed, definitely the SME sector will stand to benefit much more. When the SME sector wants to export, if the time taken for customs clearance is reduced, if the bureaucratic red tape is cut further, definitely they would stand to benefit much more than the larger exporter or a bigger entrepreneur. So it's really aimed at the SME sector. तो साहिब साहब तो ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा रह चुके हैं और अभी एसोसिएशन के जरिए जो इंडस्ट्री है उसको सर्विस कर रहे हैं. ग्राउंड पे आपको कितना दिख रहा है जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उन पर कुछ अच्छा असर पड़ रहा है जो ये कदम उठाया है? जहाँ तक गवर्नमेंट ने जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस किया है, ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसेस किया, उससे स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा है. हमें देखना होगा जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज में एवरेज साइज़ क्या है, वो 3 से 4 लोग उस कंपनी को रन करते हैं. तो एक तो पहले उनका मैन पावर कंस्ट्रेंट्स है, उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है. जी. तो इनफैक्ट जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज पे आएगा. और ये बहुत कुछ क्लियर हो गया. जैसे आज की डेट में आपको अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, आप ऑनलाइन फाइल करते हैं. पहले पार्ट 1 मिलता था, फिर बाद में पार्ट 2 मिलता था. आजकल आपको उद्योग आधार कार्ड ऐसे ही मिल जाता है. पहले बहुत से जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो इंडस्ट्रीज को तंग करते थे. अब गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया, विदाउट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर आपके यहाँ नहीं आ सकता है. तो ये जितने ऐसे के कदम लिए गए हैं जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड हैं, जो इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया. और सबसे ज़्यादा फायदा इसको स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज मिलेगा, वो उनकी कॉस्ट एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है. So we have another question as well on Twitter. Let's have a look at that question, which is on Twitter. ट्विटर के जरिए अगला सवाल लेते हैं बहुत सारे लोग. हाँ ठीक है, ये सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर. It's by Raj Narayan Sahu, and this, I want to start dairy business in my village. How government will help me? How do I get financial support? ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, आप मतलब असल ज़िंदगी में जो इस्तेमाल कर लिया इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितना आसान होगा. कौन कंफर्टेबल है आप में से? नहीं, जहाँ तक डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने के सवाल है, बहुत से रूरल बैंक्स हैं, सिडबी मुद्रा बैंक है और बैंक्स हैं जो इस तरह के लोन देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. और मेरे को नहीं लगता कि डेयरी बिजनेस में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये देख रहे हैं. तो अगर इनके पास कोई भी एक प्रपोजल जिस तरह का ये डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं इनको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने जो लोकल बैंक हैं उनके पास जाएं, अपना प्रपोजल बनाएं. और ये लोकल बैंक जो है बहुत ज़्यादा ईगर रहेंगे आज के इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए. हमें ये भी देखना होगा कि बहुत बड़ा जो फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो रहा है, कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है लार्ज सिटीज़ में, हमें जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम विलेजेस में या टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में कर लेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा है. तो इस तरह का अगर कोई प्रपोजल है तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट होगी वो अपने लोकल ब्रांच से मिलें. और गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम है जिनमें इनको कंसेशनल रेट 6% 7% पे क्रेडिट अवेलेबल होगा, जिससे अपना ये प्रोजेक्ट बढ़ा सकते हैं. और चूँकि ये बिल्कुल लाइव प्रोग्राम है और इसमें राजनारायण जी ने सवाल किया है, तो उससे एक आइडिया भी आया कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए राजनारायण जी. और उसके ज़रिए हम वादा करते हैं आपसे कि प्रोग्राम भी हम इस पे करेंगे और डेयरी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपके, आप उसमें कर सकते हैं. तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो आप उस योजना के बारे में पढ़ सकते हैं. जल्दी हम उस पर भी प्रोग्राम लेकर के आएंगे. आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और दर्शक क्या जानना चाहते हैं. ट्विटर और जीमेल दोनों ही माध्यम हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त. आमोल सावंत साहब, विल GST help Indian economy to rise its ranking in the ease of doing business? प्रोफेसर साहब. Oh, there is little doubt in my mind that मुझे लगा कि आप बोलेंगे कि बिल्कुल बहुत कई रैंक बढ़ जाएगा. चलिए. नहीं, certainly there will be improvement. Okay. I don't deny that. The multiplicity of taxation that gets simplified, the advantage of getting rid of cascading effect of indirect taxes, that certainly the final producer and exporter can benefit from. But there's also one small bit of a concern. There are government schemes which are not based on reimbursement. They are based on maybe credit in advance. For example, the advance license scheme or advance authorization scheme. Now, I do apprehend that with GST coming into place, we might move towards a system of reimbursement of government incentives. That will have an adverse impact on cash flow of firms, and particularly small firms may have to have
a different strategy of how to handle a situation where they do not get government incentives in advance. Instead, they have to rely on a reimbursement. So that will be one area of possible concern. But overall, I think when it comes to a balanced picture, certainly the gains in simplification of taxation, ease of getting reimbursements, that will overtake the other downsides. कंसर्न्स की बात करें डॉक्टर साहब, आपने दो फैक्टर्स पे बताए थे कि हमारी रैंकिंग जो है लोअर हुई। एक तो एक्सेस टू क्रेडिट और दूसरा पेइंग टैक्सेस। हाँ, पेइंग टैक्सेस। तो अब अगर इस सवाल से जोड़ करके देखें तो देखिए, जैसे हमने बोला है कि जीएसटी में बहुत से टैक्सेस इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो एक तो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट उससे लोअर हो जाएगी। पहले हर टैक्स को पे करने के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, वो नहीं होगा। दूसरी बात, कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस वेदर इट्स फॉर एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। द इशू विच अभिजीत हैज रेज्ड इज विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट्स, वेयर यू हैव एन exemptions, whether the exemptions will continue or they will not continue, there is an issue on that, because if they are not continuing, then you have to arrange a fund for paying of the taxes. When the industry is short of working capital, why we expect the industry to borrow money to pay taxes? But I think that is still at a draft stage. We are in discussion with the government, and we hope that whatever facility which the trade and industry is enjoying currently will continue under the GST regime. Well, we have another question on Twitter as well, so let's have a look at that question on Twitter. From what on the tweet is by Priyanka Raj. What are the government blueprints in making simpler tax laws for attracting more investors and improving the rank of ease of doing business? I think the biggest tax reform is definitely the GST. Yes. We are seeing once the GST comes in, it will be a game changer. Multiplicity of taxes will be avoided. On the direct tax front also, we have seen that government has done away with the wealth tax. Government is reducing the corporate tax, and we are ushering an era where we have the predictability of the tax regime. One of the biggest concern of foreign investor has been the predictability of your tax regime. True. So I think now whatever indications have come from the government, they are moving towards that direction. We will have a stable tax regime. We are talking about the GAR also, which will be put into place. So all that a foreign investor is not concerned with the rate of taxation, because that is something which he can work upfront. Right. What he is concerned is that tomorrow you should not interpret a tax law with a retrospective effect, and the new government has given clear indication of that. This will definitely assure all foreign investor and everybody in the country. So, but on the taxation front, you say that there are things actually moving on. So, but then another important matter of concern is the enforcing contracts. Over there as well, if we look at the World Bank rankings, we stand somewhere at 178th position. In fact, we intend to be a global economic power. That shouldn't be a position where, like if we look at the example of China, it is 7th in that rank. So that is the success of the business destination. And then though it ranks around 84 in the World Bank. I will not like to compare India with China, because they have a different law. But definitely I do agree, and that's why government is moving the direction of setting commercial courts where these decisions can be expedited. Because if you are going through a normal court procedure, getting a decision takes years after year. But if you have separate tribunal, you have commercial courts with full power where their appeal can be challenged only in High Court or in Supreme Court, definitely to a large extent you will address the proper enforcing contracts. So, Professor, before we go into the grip, in fact, it takes 1,420 days, in fact, to settle in India, in fact, something on contracts. That itself is the biggest concern, in fact. Don't you think it is pretty much severe in an era which we are living in? Oh, I fully agree with you that our ranking on enforcing contracts does leave a lot to be desired. Let me just illustrate this with an example from global value chains. What happens in the context of global value chains is that the foreign lead firm, which really is the brain behind and the organizer of a global value chain, it does not make investments, it does not have an equity ownership in a country. It gets into a contract with suppliers or tier 2 suppliers, and it would prefer to go to those countries which have a better track record of enforcing contracts. And that is where we are perhaps losing out, since our ranking on enforcing contracts is fairly low. Rather, it's quite abysmal, let's admit it. Indian firms definitely would find it very difficult to link into global value chains at this juncture.
There are other factors which prevent Indian firms from linking into global value chains, no doubt about it. But this definitely becomes a crucial deterrence for lead firms to look at Indian suppliers. They realize that if something goes wrong in their contract, it would take a very long time to enforce their rights. So they would perhaps prefer to stay away from India. और जो थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है उसके बाद से अब ये बहस और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि भारत को कॉन्ट्रैक्ट लॉस को लेकर के किस तरह से ज़्यादा सजग रहना होगा और कैसे सरल बनाना होगा वहाँ पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप सोचिए कि मुझे हर रोज़ नई नौकरी खोजनी हो या फिर किसी कंपनी को हर रोज़ एक नया कर्मचारी ढूंढना हो, कितना मुश्किल हो जाएगा काम करना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कितना तैयार है एकेडमिया और इंडस्ट्री आपस में तालमेल करने के लिए समझेंगे दोनों ही मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूं सूर्यदेव, एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Welcome back to Economy Today. Let's, without any delay, let's take the questions. We have a question on Gmail from Apa Pillai. Let's have a look at what she has to ask. The question is, what are the various incentives provided by government to exporters? In fact, the government provides a lot of incentives. Some of the incentives may be called what is known as duty neutralization, where the government refunds the duty which is paid on the inputs used in export production. Government also have promotional schemes where they provide you benefits to cater to the new market, to offset the high transportation cost of that, which is given in the form of MEIs scheme. For this sector, they have the SEIs schemes also. And I think government also look into your credit cost. They have already introduced interest equalization scheme where 3% interest subvention is given, and that subvention is given to MSME sector across the sectors, where for the large sector it is sector specific. So government is definitely looking at not only the zero rebating of exports, but they are aware that there are disability factors in Indian exports, and through promotional scheme they try to offset that also. Right, so we have another question as well on Gmail itself. Let's have a look at that question too, if I'm not wrong, from Gurudeep. Let's have a look at that question on Gmail. And the question on Gmail is, government relaxed FDI norms in certain sectors. How far we can reach to be the top exporter of goods and services by Gagandeep Singh? So you would like to answer that? No, definitely, I think FDI is one of the instruments which helps in promoting the exports, because with the FDI, you're not only getting the money, you are getting technology also, you're getting a market. And China has been a very successful example of export promotion through FDI. But when we are talking about moving up to the top exporter in goods and services, we have to definitely move a long way. And I think we are into that direction. But the basic issue is whether our manufacturing is competitive or not. Unless your manufacturing is competitive,
you won't be able to sustain an export field. That's why we have to do whatever is possible to promote manufacturing into the country. And I think one of the reasons when we are talking about the high cost of Indian exports, the cost incurred in taking the goods to the ports or from exporting from different destinations, that is to do with your high logistics cost. In fact, the logistics cost in India is around 14% of the GDP, whereas in most of the country it is 7 to 8%. Today it costs you much more than carrying a container from, let us say, Ludhiana to JNPT, then exporting from JNPT to any port in the Western Europe. It cost me $800 to carry it from Ludhiana to JNPT and $180 to $200 to ship it to any port in the Western Europe. But this government has realized that, and that's why you are seeing that a lot of changes has been made. And one of the root causes that we are overusing road for the transportation. We have to move to the railways. World over, 75% of the cargo are carried by railways. In India's case, it is less than around 30-35%. And this government is also putting a lot of emphasis on the coastal movement of cargo, which to a large extent will reduce your cost. They have recently relaxed the cabotage norms also for the ports, which have more than 15% of the transshipped cargo. So all these measures which they are now attempting it will to a large extent reduce the logistics cost. But manufacturing also require infrastructure. So we are looking into now the east-west corridor, north-south corridor, the DMIC corridor, then 4 more corridors which are coming, and I am hopeful that in years to come the manufacturing will be competitive in India, and once that happens, we can look into the moving up our ranking in goods and services export. So, but you're talking about the manufacturing. Apart from these corridors, has something really being done, enough being done in India to improve the manufacturing sector? Because latest even RBI is also talking about certain firms, you know, where there is a risky debt of over like 2 lakh crores as well from the manufacturing point of view. Has it really done? Has enough been done so far? No, the point is that it's an ongoing process. You can't make manufacturing competitive in one go. And let us look at what is the reason why these multinationals are moving from country to country. They are looking at a low manufacturing cost. So if India, even if it attracts FDI in manufacturing, if you are not going with that process time and again, this will move to some other countries. We have seen that Samsung moving from South Korea to Vietnam, and now they are looking for a different destination. And I think this is something you have to look into, sustained manufacturing into your country. Right, so we have another question as well on Gmail by Anand Dubey. Let's have a look at what he has to ask on Gmail. And the question is, as Singapore Prime Minister said, there is a need to do something for land acquisition, labour law for more investment and ease of doing business, by Anand Dubey. Prasar? I'll just focus on the labour law aspect. And that is something which is really constraining our manufacturing. It's constraining our exports. If we look at enterprises in India, let's just look at the apparel sector, which employ more than 5,000 labour. You can count such factories on your fingers. Just shift our gaze to Bangladesh. There, in and around Dhaka, you have a very large number of factories which employ more than 5,000 labor. What does this tell us? Larger factories, more labor, more employment reduces average costs, whereas rigid, restrictive labor laws in the country, in India, certainly is an important factor which has prevented us from taking advantage of economies of scale. It has escalated our costs, made our manufacturing slightly higher cost, made our exports less price competitive. So clearly having some flexibility in labor laws will go a long way in making our manufacturing more cost effective, and also making our export sector more responsive to changes in external demand. So certainly labor laws is an area which has got the attention of the government. We need to see what steps the government takes, how the government blueprint unfolds over the coming few months and the next year or so. And if we are able to move in the right direction, I see no reason, if these attempts are also supplemented with improvements in infrastructure,
why we cannot strengthen our manufacturing and why we cannot move up the ranking in exports of goods and services. Right, sir. We're getting more and more number of questions as well. But before that, let's slip into a short commercial break. Don't go anywhere, and we'll take all the questions which are on Gmail and Twitter. Stay tuned. This is last. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We are talking about ease of doing business. We have guests as well. Let's have a look at the questions which are coming in on Gmail. We have Pranjal Singh asking a question. Let's have a look at what he asked. Why we are not working to lesser import from China and ask for investment in our country other than dealing as client? To Pranjal Singh. So, Professor Das, I think it's an interesting point. Imports from any country are determined by many factors. It makes no sense to restrict imports from a particular country if it's a fair import. But as all of us know, if imports from any country is unfair in terms of dumping, then we take action through anti-dumping. So we are trying to restrict imports if it's dumped from China through anti-dumping measures. So government has been moving to curtail such unfair trade practices. No, but I think he has raised a valid point, and that should have been done by country long back. We should have aligned our FDI policy with our tariff. Yes, China has done this very successfully in sector where they wanted FDI. They have definitely increased the duty. Let me give you an example. I was talking to a manufacturer of medical diagnostic equipment from China, and he said that I would have established my plants in India, but since your tariff is just 5%, I'm reluctant to do that. चलिए, सोनिया गुप्ता हमारे साथ ट्वीट के जरिए जुड़ रही हैं अपने सवाल के साथ. आइए देखते हैं उनका सवाल. मोहित, मनोज, सूरज अहमद, लगातार लोग हमें इस प्रोग्राम में सवाल कर रहे हैं. डज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंप्रूव द ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ द कंट्री? सोनिया, प्रोफेसर साहब. Indirectly, yes, because if ease of doing business ranking improves, it does show a good prospect in different sectors of the economy, and if there are better prospects for different sectors of the economy, certainly that will have a positive impact on the overall growth of the economy. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखते हैं कि किसका सवाल है. शायद मोहित कुछ जानना चाह रहे हैं या फिर मनोज जी का जीमेल के जरिए सवाल लेने की कोशिश करते हैं. जीमेल पे हाउ द रेट कट ऑफ द फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस अफेक्ट द इंडियन इकॉनमी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट. मुझे लगता है इसको पास करना चाहिए क्योंकि रेट कट तो यूएसए के फेडरल रेट कट से जोड़ कर देख रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को. ठीक है प्रोफेसर साहब, अगर हम इसकी स्किलिंग की बात करें तो क्या हम वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, चूँकि आप एकेडमिया से जुड़े हुए हैं, हम स्किलिंग पार्ट में क्या हम रेडी हैं और क्या इंडस्ट्री का उसके साथ जो लिंक होना चाहिए वो हो रहा है? हम लोग इम्प्रूव अवश्य कर रहे हैं. यदि हम लोग इसमें जर्मनी को मापदंड माने, जो कि स्किलिंग में सर्वोत्तम देश है, हम लोग उसके स्तर पर नहीं हैं. लेकिन जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है उससे दो तीन चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं. रिकग्निशन, स्किलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू अचीव बेटर स्किलिंग, एंड actually implementing projects on the ground to reach that destination. I think we are in the right direction. We have another question on Gmail as well. Sir, on Gmail, it's by Manoj. Let's have a look at that question, what Manoj has to ask. If I'm not wrong, it's on FDA. FDA are interested
to come into India in the field of mining, but in India, land is the main problem to be acquired. How can this problem be solved? No, in fact, I don't think the FDI are keen to come into the mining sector itself is going through a very tough phase. Yes. A lot of Indian companies who invested in mining abroad are facing problem. But definitely, if they are interested to come into mining sector now under the new labor land regulation, they have to approach the state government, and many of the states have the land reserve available with them when they can give it for the mining also. Let's have a look at other question as well on Gmail. We have Suraj Kumar questioning on Gmail. Let us see what his question is. Is there any chance of getting below 50 ranks in ease of doing business in next year? In fact, the target is set for the next 3 years, Professor Das. It would be highly speculative, but given the past trends, it would be a bit difficult at this juncture. No, we are in fact right now aiming at to be in the top 100, and then in the next coming 2 years we will be aiming to be in the top 50. Let's have a look at other question as well on Gmail itself. The question is by Tasleem Ahmed on Gmail. How rise of NPAs of bank impact ease of doing business? How can we in fact link this? No, in fact, the two are not related one. Yes. But if you have rising NPAs, that means you require better laws to deal with that NPAs, and that in fact will definitely streamline the process. And when the processes are streamlined, in a way it will help in the ease of doing business. जो आपने कहा कि जो बैंक क्रेडिट है वो नहीं मिल पा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट काफ़ी ख़राब स्थिति में, अगर एनपीएस हो जाते हैं तो अगर इंडस्ट्री को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है तो वो ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, और शायद उस वजह से इसके दोनों पहलू हैं। एक तो इनको इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके एनपीएस हो रहे हैं तो हमें ये देना होगा कि हमने प्रॉपर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस की थी या नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो हमें उस वैसे प्रोसेस करने होंगे, और वन आप अपने प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कर जाते हैं तो डेफिनेटली ईज ऑफ बिजनेस को भी उससे सपोर्ट मिलेगा। Well, in fact, I hope we finish done with the questions as well. In fact, so anyway, thank you very much, Mr. Sahai, for coming to our studio and giving your analysis. Also, Professor Das, for coming to our studio and giving your analysis. So we hope most of the questions have been answered with respect to the ease of doing business. नहीं, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत सारे और भी फैसेट्स हैं, मिसाल के तौर पर जो स्टेट्स कर रही हैं और स्टेट्स का इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर फाइनल कमेंट लेना चाहते हैं, स्टेट्स को करना क्या चाहिए प्रोफेसर, अगर उनको अपने आप को इम्प्रूव करना है दुनिया के सामने? स्टेट्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला नहीं है। स्टेट्स खुद गेन कर सकते हैं यदि वो ऐसा फैसिलिटेटिव माहौल बनाए, एनवायरनमेंट बनाए जिसमें उनके प्रोड्यूसर्स एक्टिवली एंगेज हो सकें एक्सपोर्ट्स में। ये एक बहुत अहम चेंज इन माइंडसेट होना है स्टेट में। शायद साहब कुछ लोग कर रहे हैं इस पे काम? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप देखिए बहुत स्टेट्स में बहुत हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। मैं अभी इन दोनों की रैंकिंग, तेलंगाना और आंध्रा की रैंकिंग देख रहा है। तेलंगाना नंबर 1 पे है विद 96.98 पॉइंट्स, और आंध्रा 96.97 पॉइंट में, दैट 1 by 100 पॉइंट्स से दोनों स्टेट के बीच में डिफरेंस हो रहा है। और हमने देखा है बहुत से स्टेट में अपनी ओर से भी उन्होंने काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बात किया है। अगर हम लेबर लॉस की बात करें, राजस्थान ने बहुत से कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो पहले 67 डेज में रहता है उसको 21 डेज पे ला दिया है। वैट ऑनलाइन बहुत से स्टेट्स ने किया है, और एक स्टेट में भी रियलाइजेशन आ रहा है कि हमें खाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके ही हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और वो इसलिए इस दिशा में वो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में वक्त सिर्फ इतना ही है, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।